गोरी चिट्टी मुट्टे यार मेरा पुल्ला जिन्ना अपनी नीरू के साथ फाइट्स छुपाने के लिए मेरे ऊपर डाल देते हैं. ही इज वेरी स्मार्ट. लाली पाउडर मस्कारा मैं बोता लानिया. Me and Neeru were very good in the sets together. चन्ना चन्ना मैं ब्यूटी पार्लर जानिया. चन्ना चन्ना मैं ब्यूटी पार्लर जानिया. चन्ना चन्ना मैं ब्यूटी पार्लर जानिया. लंबे समय बाद फिर तो एक बार जिमी शेरगिल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सरगुण मेहता एक लव ट्रायंगल विच नजर आने वाले ने जिंदू आवत. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. सो लव ट्रायंगल नीरू बाजवा सरगुण मेहता जिमी शेरगिल. सब तो पहला जिमी व्हाई डिड यू चूज दिस फिल्म? आई थिंक पंजाब बहुत मेहरबान है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ. We are there with you, Jimmy. हम तुम्हारे साथ. ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ. ਤੇ ਨਹੀਂ, I think you choose a film because of the story and the director, the team. ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ you know, especially with that number one thing happening between them. Then at the same time, also Navneet Singh directing it. The whole film shot in beautiful locations because the story demands it. With beautiful songs, beautiful locations. So I think why would a person not do it? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. And what was your reason of choosing it? अब ये ना कहते ना कि जिमी शेरगिल नीरू बाजवा number one. Of course, it's a very big reason. किसी भी yeah, it will be. I'm telling you this. I'm better than you, correct? No, Is it so सरगुण मतलब एक ये हो की रहा है? I wanted to show myself that I can also stand on the same ground as Jimmy and Neeru. And मैं शायद उनके लेवल पर I can. I don't have a problem. Don't do this to me. I don't have a problem. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ. ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕੀ ਸੁਰ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਿਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ. ਐਂਡ ਨੀਰੂ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸੋ many films. I'm sure 20 ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਦੈਟ. ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ. ਮੈਂ ਤੇ ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਊ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੱਚ 100 ਝੂਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Did they bully you, seniors? हाँ रोज मैनू बुली करते हैं प्रमोशंस ते. देखो मेरी हालत की हो गई आ. की गल कर रहे हैं? मैं पराठे खानी हाँ फिर भी मेरी हालत देखो की हो गया है. मैनू बुली करके करता इन्होंने. शूटिंग ते अच्छा शूटिंग ते इन्होंने मैनू बिल्कुल बुली नहीं किया. ना ही नीरू ने किया ना ही जिमी ने किया. दे वर वेरी नाइस टू मी. बस जिमी ने यह जरूर कोशिश की कि मैं मोटी हो जाऊँ कि उन्होंने हर वेले पूछा पिज़्ज़ा खाना तू, ब्राउनी खानी. तो राइट इन द मिडल ऑफ द सीन वी आर डूइंग अ रोमांटिक शॉट डोल एंड आई लाइक एक मिनट हाँ पिज़्ज़ा खाना. तो आई सेड व्हाट इज रॉन्ग. ही इज लाइक आई वांट टू मेक श्योर कि फ्रेम में मैं पतला लगूं और तू मोटी. तो इन्हां नाल रोमांस करना किवें सी? बिकॉज बॉलीवुड ते रोमांटिक ही इज द ओनली रोमांटिक हीरो वी हैव. सो हाउ वाज इट? It was amazing. मैं इन्हां नूं मुहब्बत च रोमांस करदे हुए वेख्या है. You know I've seen him like that. He's always been a crush. So to romance your crush, it just gets better. It's never going to be too late to do that. I'm very happy that I'm doing it. ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਰਮਾ. ਇਹਦਾ ਟੱਪੂ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਗੀ. ਸਕੀ. ਚੱਲ ਜਿੰਦੂ ਆਵੇ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਪਤਲੀ ਨਾ. अच्छा ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਯੂ ਨਰਵਸ? ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਵੈਲ ਵਿਦ ਦ ਆਡੀਅੰਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਰ I am very nervous because of her. Because she has done 2 films before this, both with Amrinder, and both blockbusters. Now she's on a hat trick, and if she doesn't get it, she's going to blame me.
for the rest of her life, Neeru that true? is going to be dead. I am going to blame them. Let's get that. अच्छा मैंने अच्छा काम किया तुम्हारी ही गलती No, no, यार, I'm not going to blame anybody. And why am I thinking of the worst? I never think of the worst. मुझे नहीं आता ये सोचना कि यार क्या अगर फिल्म नहीं, मैंने अच्छी फिल्म चूज़ करी, अच्छे लोग हैं, हमने अच्छी फिल्म बनाई, क्यों नहीं चलेगी? तो आइडिया इज़ नॉट कि किसी की फिल्म चली या नहीं चली, मुझे कोई फ़र्क नहीं आसपास क्या हो रहा है. हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, हमारा आइडिया था लोगों को एंटरटेन करना. जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो हम एंटरटेन होते हैं, तो लोग क्यों नहीं होंगे? बट वही गल है कि अमरिंदर नाल 2 फिल्मां कीतियां ਉਹ टीम ही टोटली डिफरेंट है. अमरदीप अमरिंदर एंड दिस टाइम इट वाज अ टोटली डिफरेंट टीम. सो ओ किवें ਰਿਹਾ? सी फील एकदम डिफरेंट है. अमरिंदर नाल हुण तां फैमिली टाइप रिलेशन हो गया है ना, लाहौरी टाइप, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ लगता है कि वो अमरिंदर वो अंबर यू नो देम. तो आपको पता है कि वो एक सीन किस तरह से करने वाले हैं. वो मुझे जिमी के साथ नहीं पता होता. ऑल्सो बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल. तो यू ऑल्सो हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज. नवनीत इज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड आई हैव वर्कड विद अ वेरी वेरी गुड टीम. टचवुड दे आर ऑल वेरी गुड टीम्स. तो शुरू में मेरे को थोड़ी नर्वसनेस थी, बट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर्स कमिंग आउट एंड एवरीथिंग कमिंग आउट एंड आई सॉ ऑन द एडिट्स ना, देयर वाज अ सर्टेन कॉन्फिडेंस कि अच्छा, मुझे प्री प्रोडक्शन तो लग रहा था कि फिल्म बहुत अच्छी है, बट पोस्ट में भी काफ़ी अच्छी लग रही है यार. ਰੱਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਡਫੀ. ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ. ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਰ ਕੋ ਨੀਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰੋਲਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ. Go from here. Neeru ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ. ruined the day. So do you think like are you like turning the tables or what? Because you're getting like ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟ੍ਰੈसेस ਨੂੰ. 2 सालों में 2 फिल्म्स करी हैं. आई हैव सैट होम, आई हैव वेटेड फॉर द राइट फिल्म. आई हैव डन ओनली 1 फिल्म इन 1 year, 1 फिल्म लव पंजाब इन द नेक्स्ट ईयर. नाउ आई एम कमिंग विद जिंदू एंड लाहौरी एंड द ओनली आइडिया इज़ वही फिल्म करूँगी जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस होगा और जो मुझे लगेगा कि लोगों को भी एंटरटेन करे. एंड आई टोल्ड यू दिस द लास्ट टाइम ऑल्सो कि मैं चाहती हूँ कि एक ऑडियंस का मेरे साथ एक ट्रस्ट बना रहे. आई डोंट वॉन्ट टू डू अ फिल्म दैट आई थिंक विल नॉट मेक देम हैप्पी. वो चले ना चले इज़ अनदर थिंग, बट आई वॉन्ट टू डू गुड फिल्म्स एंड आई वॉन्ट टू डू ओनली places जहाँ पर लड़की एक प्रॉपर्टी ना हो. दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन, सो आई डोंट वांट टू डू दैट. ओके जिमी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ. ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ. ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? जो पब्लिक ने वोट दी है जी, तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट कोई किमें जा सकता. That's the way it is. We are just hoping that some good stuff comes out for our industry also. Earlier the government had made the films tax free, Punjabi films. Now we're hoping that more channels come in so that our satellite at least starts getting a decent amount for the producers, because it's very very important to have at least 1/3 of what you're investing in a movie to come back from satellite. Otherwise satellite is a very big thing for Hindi movies, for Hollywood movies, for everything, for any other regional film also, industry also. So for Punjabi we are still behind in terms of our entertainment sector, so we're just hoping something good comes out for our Punjabi films in terms of the satellite also, in terms of some subsidies maybe, because a huge amount goes to the treasury as entertainment tax from Hollywood films, from Hindi films, from Punjabi films anyways are tax free. So I'm just hoping some good stuff comes out. And last question, ਉਹ ਜਿਹੜਾ pet dog ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? You both have scenes with the dog. I think the dog has a very powerful role in the film, and only because of the fact that the story is based abroad and the loneliness of these characters wherein they don't have anybody to speak their hearts out to. So then you see my character talking to the dog, because when he is called back home and he tells them that I'm feeling very lonely and lost over here, I want to come back. ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ. So that disconnection from the world happens. That's where the dog comes in. Yeah, the dog is there by default. ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ नहीं होता। यार आई एम अ पेट लवर। ये सारी बातें जो इन्होंने कही, आई टॉक टू माई डॉग डे एंड नाइट। मैं उनको उसको फेस टाइम करके उससे बातें करती हूँ। आई एम तो दैट क्रेजी। सो यू नो यू विल कनेक्ट टू इट। और वो सिर्फ ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग यू नो एक आता जाता दिस थिंग, ही इज़ कनेक्टिंग अस ऑल। और वो किस तरह हम सबको जोड़े रखता है, दैट्स व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज डिफरेंट ऑल्सो इन जिंदुआ एंड आई होप दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर टॉकिंग टू अस एंड गुड लक। थैंक यू जी, थैंक यू। 17 मार्च जिंदुआ, डोंट फॉरगेट। तारा वसीम, ABP सांझा, चंडीगढ़।